Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 1. The figure shows the velocity of a particle plotted against time. Okay, so क्या है पहले v, so पहले नेगेटिव, उसके बाद में linearly इंक्रीज हो जाता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है whatever, and पॉजिटिव है, इनिशियली v नेगेटिव whatever. The particle changes its direction of motion at some point. या मतलब पहले भी नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया था, तो हाँ, the acceleration of the particle remains constant. Yes, the displacement of the particle is zero. ये मतलब ये जो, हाँ ठीक है ना, ये साइड एरिया सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, फाइन. The initial and final speed of the particle are the same. अच्छा, हाँ स्पीड सेम है इनफैक्ट, राइट, दैट्स करेक्ट. सो सारे करेक्ट ए बी सी डी. सेकंड करते हैं. Okay, a man who can swim at a speed v relative to water wants to cross a river of width d flowing with a speed u. The point opposite to him, okay, across the river is p. ठीक है उसको, ठीक है मतलब ये या क्रॉस उस टाइप से करना है, फाइन. द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर इज जब उसकी मैक्सिमम स्पीड उस डायरेक्शन में रहेगी, तो ये तो भूल जाओ जो भी, राइट. इट्स गोइंग टू बी डी अपॉन, सो इसकी स्पीड क्या है, v रिलेटेड टू वाटर, राइट, सो डी अपॉन v. सो ए तो करेक्ट है. He can reach the point p in time d upon v. Yes, that's also right. The minimum time, of course. He can wait. Oh no. Okay, उसको p में जाना है, हाँ. Right. Okay, उसको p में जाना है. Then it's not going to be d upon v. Okay. So yeah, it's going to be c, I think. So ये v है, उसको कैंसिल करना है, यहाँ पे v आ गया, and then पूरा u है, so square root of v square use कर बची velocity रहेगी, right? So that's why this thing. He cannot reach p if u is bigger than v. Of course, फिर ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, which makes no sense. मतलब उसको रीच करना है, then yeah. So D is right. Next, third करते हैं. If no external force acts on the system, velocity of the center of mass remains constant. Yes, that's right. Velocity of center of mass is not, नहीं ऐसा नहीं होता है. Both velocity and acceleration of the center of mass remains same but not zero. नहीं, acceleration zero है यार, कोई external force है नहीं system पे. Acceleration of center of mass is zero, right? So D is correct and A is correct. So AD. Next question, fourth. In the figure, the block B of mass m starts from rest at the top of a wedge W of mass m. ठीक है. All surfaces are smooth without friction. W can slide on the ground. B can slide down onto the ground. अच्छा. Wait, अच्छा W इस पे सारे smooth है. Okay, fine. Right. Moves along it. The speed v has an elastic collision with the wall. अच्छा. So पहले ही गिर जाता है, ये उधर जा रहा है, ये elastic collision होता है. Okay. And climbs back onto, oh god, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें. We will reach to the top of W again. हाँ, तो अगर वो उसके ऊपर चढ़ता है, then of course it's gonna reach to the top because energy conservation, right? Yeah. But wait a second. Except कि अपनी अब इन लोगों ने मोमेंटम इस डायरेक्शन में दिया. Wait, okay, नहीं, ये टॉप में कभी रीच ही नहीं कर पाएगा. Yeah, the thing is कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों का मोमेंटम कंबाइंड इधर रहेगा, राइट, एक्स डायरेक्शन में. सो जब ये इस पे ऊपर चढ़ भी जाएगा एट एनी गिवन मोमेंट, जो पूरे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ऐसा है, राइट, तो अगर मतलब ये ऊपर पहुंच भी जाता है, राइट, इन इवन इन दैट केस, अच्छा इसकी जो मैक्सिमम हाइट रहेगी तब क्या होगा, तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या इतना मानते हो, तो फिर सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, राइट. या तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उनका एडिशन जो है दैट इज राइट, दैट्स पॉजिटिव. और नॉर्मल फोर्स हमेशा इस वेज पे ऐसा लगने वाला है, तो ये तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, एंड बी पे डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, राइट. बट एट सम पॉइंट, राइट, ओके, एट सम पॉइंट वो ऊपर चला जाएगा, एंड देन हाँ, वियर्ड. बट हाँ, उसकी एनर्जी कभी भी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो तो नहीं हो सकती, बिकॉज इसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, राइट. सो ये कभी भी ऊपर वापस नहीं पहुंच पाएगा. वी विल नेवर रीच द टॉप ऑफ W अगेन. From the beginning till the collision with the wall center of mass of B plus, yeah, that's right. So B is correct. Just from the collision, the center of mass of B plus W moves with the velocity of 2mv upon m plus v. हाँ, v क्या है यहाँ पे, v दिया है क्या, slides down to the ground, moves along it. अच्छा, so ground के along वो move कर रहा है with v, of course. तो फिर mv momentum, 2mv momentum impart किया wall ने इस पे, yeah, it's gonna be this thing. So C is correct. Okay, when B reaches its highest point on W, the speed of W is this thing, I guess. Yeah, मतलब वो पूरी की पूरी सेम स्पीड से जाने वाला है, right. So whenever it reaches the highest point with respect to W, ये जो है वो जीरो वेलोसिटी पे आ चुका है, मतलब कि ये दोनों जो चीजें हैं
वो सेम वेलोसिटी जा रही है इनफैक्ट. इन दैट केस ऑफ कोर्स दिस मस्ट हैपन, सो डी इज राइट. तो ये क्या बताया, ये बताता है कि एक्चुअल में वेलोसिटी रहने वाली है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसका मतलब कि वापस से कभी ऊपर आएगा ही नहीं. ओके नेक्स्ट. इवन द एनर्जी कंजर्व हुई बट वो ऊपर नहीं आ सकता. Okay, in the system shown in the diagram, all surfaces are smooth, pulleys and strings are ideal. If and what? If and R is what? I think यहाँ पे कुछ तो भी चाहिए था बट उन लोगों ने वो omit कर दिया. Okay, okay, pulley and string are ideal. System of two blocks. अच्छा ठीक है. So A और A भी बोल रहे हैं. Then just after the system is released from rest and choose the correct. ठीक है. सो रेस्ट से रिलीज किया है, फाइन. सो यहाँ पे क्या टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, ये काम नहीं कर रहा बिकॉज वो नॉर्मल से. ठीक है. तो ये टेंशन जो फोर्स है इसको खींच रहा है एंड इट्स ऑल स्मूथ राइट. या और इसको ऐसे खींच रहा है राइट. ओके कूल. और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है आई अज्यूम. राइट. ओके राइट. एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड आई गेस. या मतलब ये इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है इस वजह से ये. या ऑफ कोर्स that should be the case, of course. Okay, normal force exerted on B on A, okay, by B on A is 0. Okay, wait a second. ये जो ब्लॉक है ये ऐसा जा रहा है राइट. एंड ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकल मूव. ओके सो A is actually not moving, but oh shit, it's not good. It's not good like that. This is complicated. तो या ओके वो डाउनवर्ड जा तो रहा है हमारी फ्रेमवर्क से जा रहा है. ओके थोड़ा सा अजीब नहीं हो रहा है. थिंग है इसकी बी पे टेंशन फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ए पे टेंशन फोर्स ऐसा लग रहा है, इस पे ग्रेविटी लग रही है राइट. ऑफ कोर्स अगर तुम सोचो कि इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लगे, अगर नहीं लगता है देन दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग डाउन. तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगना मतलब जरूरत नहीं है नॉर्मल फोर्स की. बट अगर लगता है देन इट्स एक्चुअली स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. तो ये तो वैसे भी कांटेक्ट को कम कर रहा है राइट. ऐसी कौन सी चीज है जो कि इनके कांटेक्ट को होने दे रही है, ऐसा कौन सा फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है. तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा. या दैट्स द थिंग, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा. एंड या लाइक दिस इज गोइंग डाउन और ये ऐसा जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक्चुअली ऐसा जा रहा होगा. हाँ मतलब एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ये एक्सेलरेशन ऐसा है इवन दो इसकी. या ओके दिस इज वेरी वियर्ड. सो हाँ ठीक है समझ गया मैं. एक्सेलरेशन ऑफ ए इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी. आई डोंट थिंक सो, इस पे कंपोनेंट है यहाँ पे. ओ अच्छा नहीं या इट्स राइट. इट्स हाँ ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो फिर ये इट्स परपेंडिकुलर. इनका मैग्नीट्यूड सेम है. क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब ये जितना नीचे गया. उफ ये तो बड़ा अजीब हो रहा है यार. अच्छा विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बी एक पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रहा है. ऐसा एक फोर्सेस लग रहा है एम ए, ऐसा एम जी फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है राइट. एंड देन यहाँ पे ये हिंज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बी ऑफ कोर्स. सो अकॉर्डिंग टू एंड बाय द वे यहाँ पे या लाइक ये जो है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं कंसिडर करेगा बिकॉज ये खींच सकता है इसको राइट. सो विद रिस्पेक्ट टू ए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये राइट. सो इसका जो डी आर अपॉन डी टी वैल्यू रहेगी वो यहाँ से ई आर ओके आर डबल डॉट वाली वैल्यू. और ओमेगा स्क्वायर आर भी जीरो है तो उसको तो भूल जाओ. द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओके दैट्स गोइंग लाइक दिस. हाँ अंडरस्टैंडेबल. ओके कूल दैट मेक्स सेंस. सो हाँ राइट ये जो एक्सेलरेशन रहने वाला है दैट एक्चुअली डज गिव अस आर डबल डॉट एंड दैट्स द सेम थिंग. सो सेम आर डबल डॉट अपने को इसका नेगेटिव बट वॉट एवर अपने को बी के जैसे चाहिए रहेगा. सो या इन दैट केस ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट एंड सी इज नॉट करेक्ट एंड नॉर्मल फोर्स exerted by B on A is 0. That's also correct. So A, B, D. Next. Sixth करते हैं. Sixth is two boats start from the midpoint of river in case 1. Okay. At midpoint of the pond of still water in case 2. अच्छा ये ऐसा है. Fine. If all velocity shown in
figure relative to water. अच्छा, mark the correct options about time taken to reach the nearest bank. Okay, ये रिवर्स हो, राइट, तो ये सारे वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, राइट? हाँ, बोथ केसेस इनफैक्ट सेम ही है ना। या ओके, बोथ ए टेक्स लेस टाइम, क्यू आखिर नहीं 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 नहीं, इसका भी ये कंपोनेंट सेम है, इसका भी कंपोनेंट सेम है, सो सेम टाइम लेने वाले। ऑल दी फोर बोर्ड्स, राइट, टेक द सेम टाइम ऑफ कोर्स, इनके सारे कंपोनेंट्स तो सेम है ना, मतलब अलोंग ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर सी इज करेक्ट एंड टाइम ऑफ रीचिंग बोर्ड कैन नॉट बी, ओके, ये तो सी आएगा, 7th, राइट, दैट मस्ट बी द केस, राइट, ये सारे विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिखाया तुमने। Okay, next. Find the acceleration of the three masses A, B, C as shown. Okay, shown in the figure. ये A है, ये B है, C है. Friction coefficient between all surfaces is 0.5. Friction है, बढ़िया. Pulleys are smooth. Okay, तो बुरा हुआ. And okay, pulleys are smooth बोला है. अच्छा, at least वो तो अपने को अच्छा दिया. क्या T dot X? T dot X, right? Yeah, of course. So right, T dot X क्या होता है? तो इसके लिए ओके, इस पे टेंशन टी ऐसा लग रहा होगा, इसके अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा सर? ओके फाइन, जस्ट टी एंड देन इसके अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा? इट्स गोइंग टू बी टी अपॉन एम पी, इसको मैं M2 बोल रहा हूँ, माइनस द जी इफेक्टिव, राइट? या जो कि इसको ऐसे खींच रहा है, ऑफ कोर्स इन दिस केस जी इफेक्टिव इज जस्ट फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम व्हिच इज जी म्यू, दैट शुड बी द थिंग, ऑफ कोर्स। सो यहाँ से पहला टी डॉट एक्स वाला आ गया, फिर बाद में टी डॉट एक्स में दूसरा, आई शुड से टी डॉट एक्स का डबल डेरिवेटिव वॉट एवर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2t है और t अपॉन, इसमें 2t रहेगा ना, या सो 2t अपॉन m1 माइनस वन जी इफेक्ट इज जस्ट जी म्यू, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन ऐसे पुल कर रहा है इसको, ओके, सो t जस्ट अ सिंगल t, right, or it's going to be t upon m3 minus, अब इसमें g effective क्या है, just g, right, and this must be equal to 0 and from this you can figure out the tension, right? So यहाँ से क्या आ रहा है, t times of 1 plus 4 upon m1, oh it should be 1 upon m2, sorry, and then plus 1 upon m3, that's equal to, so यहाँ पे 3g mu आ जाएगा, and then g times of 3 mu plus 1, I guess, yeah, makes sense, sure. So इसका मतलब क्या हुआ, and by the way m1 m2 दिए हुए, so m1 is 1, m2 is 1 and c is, so m3 is 2. wait what, seriously ये 2 है? कुछ अपने गलत किया क्या इसमें? नहीं, ये तो सही लग रहा है मुझे, of course mc is 2, हाँ, okay, that's weird, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसका, t times of 1 plus 4 plus 1 upon 2, it's going to be 5 plus 1 upon 2 which is 11 upon 2, right? So 11 upon 2 times t, that's equal to ये चीज, so mu क्या दिया आपने को, mu is 1 upon 2, so g times of तो अपने को सब कुछ g में लिखना है ना, good, so 3 times of 1 upon 2 plus 1 which is 5 upon 2 I guess, so t is just 5/11 of g, right? अब उसको हर जगह पुट कर देते हैं, so what you want by the way, acceleration of 3 masses, अपने को तीनों ढूंढनी है, ठीक है, पहला ये वाला मास का acceleration करते हैं, तो t upon m2 is just 1, so 5/11 g minus g mu is like, okay, g upon 2, so g times of 5 upon 11 minus 1 upon 2, so that will be just negative 1 upon 22, so हाँ, ये तो कहीं भी दिख रहा नहीं है, okay, this is the not nice, ये सही नहीं हुआ, clearly that was the case, of course, right? We know this must be the thing, so this should have worked. This should have worked. Mass A, mass B, mass C अपने को दिए हुए, right? Mass A, mass B दोनों 1 दिए अपने को. Oh, is it like? Oh, it's 1. Okay. अब समझा क्या गलत हुआ. Yeah, right. अच्छा, ये T upon M2 वहाँ से लिया मैंने. हाँ, तो वो उधर जाएगा. It's gonna be 3 of course. So like 3g mu plus g mu is sorry, 2g mu. Okay. 3g mu and then plus g, so g times of 3 mu plus 1,
3/2 plus 1 is like 5/2 of course. यहाँ पे 5/2 आना चाहिए. And then this must be, so m1 m2 को 1 कर दिया, and then m3 is just 1/2. So 5 plus 1/2, which is 11/2. There we go. T must be 5/11 of G. अगर उसमें नहीं है, it's wrong, right? That's right. It's just wrong. So, हाँ, I don't know. ये क्वेश्चन अजीब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डोंट थिंक मैंने इसमें कुछ गलत किया है. क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया है? आई डोंट थिंक सो. ओह, ऐसा हो सकता है कि लाइक ओके ये मूव ही ना कर रहे हो. हाँ, दैट कैन हैपन आई गेस. राइट. ये जब होगा जब ये सारे मूव कर रहे हो, राइट? अच्छा, ये एक्सप्रेशन को क्या मिला था? पहला वाला इट वॉज निगेटिव, राइट? सो पहला इट्स ओके, ये जो है ये ऐसे मूव करेगा, बट एक्चुअली नेगेटिव मूव कर, मतलब ऐसा मूव कर रहा है, विच मेक्स नो सेंस. सो ये गलत है. ओके, एंड इसका क्या है? 2t/m1. So 2 times of this, like okay, 10/11 minus 1/2. That's positive. So ये still ऐसे मूव कर रहा है. ओके, एंड C is of course नीचे मूव कर रहा होगा, बिकॉज या इसका आसान, यू गेट द आइडिया. सो ठीक है, B जो है आई थिंक दैट्स नॉट मूविंग. इन दैट केस if in that case एक काम करते हैं ना, ये हटा देते, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. just gotta do this thing. So we are assuming A अब मूव कर रहा है and C अब मूव कर रहा है, right? So doing this thing, just get like t times of 1 plus 1/m2 plus, okay, m2 अपने को चाहिए नहीं था. Wait a second. राइट, अपन ने क्या क्या भी डिलीट किया? अपन ने m2 वाला मास डिलीट कर दिया, राइट? अब अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो 2 टाइम्स ऑफ ये चीज, मतलब कि क्या हो जाएगा? t टाइम्स ऑफ 4/m1, सो जस्ट 4 प्लस ये चीज, मतलब कि 1/m3. 1/2 is equal to g times of 2 mu plus 1, which is like 2, so 2g. तो ये हो जाएगा 8 plus 9/2, so 9/2 times of t is equal to 2g, so t must be 4/9 of g, right? उसको अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं. So what's the acceleration of c? It's going to be ये चीज, which is m3 of mass 2, so 2/9 of g minus g, which is negative 7/9 of g. तो 7/9 of g नीचे है. So acceleration of c is b, so इसका b आंसर रहेगा. What about a? So a के लिए 2t/m1 and then minus g times mu. Mu is just 1/2 by the way, right? तो ये कितना है? ये है 8/9 minus, so 1/2 I guess, which will be like 16 minus 9 is just 7/18. That should do it. So acceleration of A is 7/18 g. So इसका आंसर D रहेगा. Next, right? Next question. 8. ये अच्छा था. 8 is a particle moves in a circle of radius r with constant speed b. Then during a time interval this much, which of the following is true? In a circle of radius r with constant speed b during a time interval of this much, average acceleration of, अच्छा ठीक है, तो start यहाँ से कर रहा है ये, and then finally जा कहाँ पे रहा है? like ऐसा. कितना है ये? pi r/3b. अच्छा, बहुत अजीब है ये. So this time v is like okay, pi r/3, मतलब तुम्हारा जो एंगल है इसका भी pi/3 बेसिकली. ये एंगल इसने या मूव किया है, राइट? एवरेज एक्सेलरेशन ये ऐसे चेंज हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक. ऑफ कोर्स ये जो है बस रोटेट हो गया. सो दिस इज द एंगल दैट्स गोइंग टू बी pi/3, राइट? सो इनका आपको सबट्रैक्शन करना है, ऑफ कोर्स. दिस इज गोइंग टू बी लाइक इनका एडिशन. दिस इज 2 pi/3, तो ये pi/3 होगा. इनका बस अपने को ऐसे, yeah, it's going to be this thing. So 2 cosine of pi/3, which is like 1/2, right? It's going to be 1, just like that. Which is, yeah, expected, of course. Just 1 times of e wala magnitude, which is v. So change in velocity is like v. Time required is of course this much. So it's going to divide the thing. So v upon pi r/3b. 3v square upon pi r. That should be the thing. So A is correct. Yes. और क्या है? नहीं, ये तो सही नहीं है. एवरेज वेलोसिटी सच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ इसमें? लाइक कम ऑन, सीरियसली करने की जरूरत भी नहीं है. एवरेज वेलोसिटी
अच्छा नहीं, अच्छा मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट? ओह ओके, या ऑफ कोर्स, नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो तेरे को पता है, एवरेज स्पीड इज जस्ट वी वो थ्रू आउट जस्ट, हाँ ये ना से कौन सा स्पीड वी है। ओके, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये चीज मुझे लेनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक 5.6 में ब्रेक करो, जो भी रेडियस रहने वाला है आर, ये आर है। 5.6 में ब्रेक किया, लाइक 2 कोसाइन ऑफ पाई अपॉन, नहीं 2 साइन ऑफ पाई अपॉन 3 आई गेस, राइट? इस केस में कोसाइन है, तो इस केस में साइन रहेगा। 2 साइन ऑफ पाई अपॉन 6, या विच इज जस्ट 1, ये 1 हो गया, मतलब कि ये जो पूरा रहेगा दैट्स गोना बी आर एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इक्विलैटरल। सो आर अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, दैट्स दी, ओके, और टाइम रिक्वायर्ड इज ये है पाई आर अपॉन 3b, तो 3b अपॉन पाई विच इज यस, सो b इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। Ninth is which of the following statements is or are correct? Incorrect. Okay. Friction force always acts opposite to the net applied force. No, no. If net force on the body is zero, its acceleration will be the same in all frames. Net force on body is zero, its acceleration will be the same in all frames. Wait, what? Sorry, क्या बोल रहे हो? Net force on body is zero. अच्छा, एक particular frame में, of course. Its acceleration will be the same in all frames. No, तुम inertial frames की बात कर रहे हो? Yes, it will be the same. But non-inertial frames, no. A person is pushing a box. The force exerted by box on person is less than the force by person on box. क्या है ये? न्यूटन यहाँ पे हंस रहा होगा। By box on person less than force by person. No, this is incorrect. तो ये incorrect है, A भी incorrect है, B भी incorrect है, right? Okay, a moving object can move with a constant velocity by a push less than the limiting static friction. I don't get it. क्या? Oh, okay. हाँ, मतलब kinetic friction जो है that is actually like less than static friction. That's why हो सकता है कि उससे कम push की वजह से भी वो move करे। Constant velocity, that's the thing. I guess yes, D might be correct, you know. So D is correct and then ABC are wrong, of course. So अपने को ABC आंसर कोट करना। 10th. A projectile is projected as shown. A proper light arrangement makes a shadow on the wall as well as on the floor. What? Question mark? Okay. So यहाँ पे light है, यहाँ पे light है, और दोनों पे shadow बन रही है. Fine. It's a projectile like this thing. Okay, cool. Which of the following graphs is incorrect? Okay, incorrect. Acceleration of shadow of the on the wall. यहाँ पे. That's a constant, of course. It's negative and it's a constant. Okay, so अपने को incorrect graph चाहिए. तो I think this is correct. Yeah. Right. मतलब ये negative दिख रहा है. Yes. Velocity of shadow on wall. Right. First decrease हुआ, फिर बाद में still decrease हुआ actually में. Right. Yeah. Velocity of shadow on ground. It's a constant. It's a constant, not like this. Okay. Height of shadow on wall. Of course, something like that. So यहाँ पे zero है, then finally यहाँ पे भी zero रहेगा. Yes, that makes sense. Like ये time axis है, अरे यार तो दिखाई रहेगा. Of course, this is the time axis and this is the, you know, ये जो भी रहने वाला है. Yeah. Of course, like. So incorrect कौन सा ग्राफ है? बस ये वाला, और कौन सा? So C is the incorrect one. I guess that makes sense. Okay, next. ये hang हो गया क्या? Okay. In figure, a block of mass m is released from rest when spring was in its natural length. The pulley also has mass m, but it is frictionless. कौन सी पुली भाई? अच्छा ये पुली, दो masses है. Okay. Released from rest, spring is in natural length. ठीक है. Suppose the value of m is such that finally it is just able to lift the block m okay, lift the block m up after releasing it. अच्छा, इंटरेस्टिंग. तो तब अपने क्या चाहिए? द वेट ऑफ, हाँ ठीक है, समझ गया. थिंग इज इसी वेलोसिटी उस पे रहेगी, तो ये एक्सटेंशन या इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रहने वाला है. इसका इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा वैसे? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी रहने वाली है? राइट, दैट्स द थिंग.
तो ये एक्सटेंशन है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स रिटर्निंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, और ये कितना नीचे जाता है वो भी। सो या ठीक है, इससे इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी रहेगी? तो स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को दिया है, कुछ कुछ भी नहीं दिया है। ओके, दैट्स नॉट नाइस। ठीक है, इसको के मान लो, के एक्स इज इक्वल टू, सो इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, राइट? सो के एक्स नॉट बोल दो उसको, इक्वल टू एम जी, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये कितना ऊपर है उससे? ये ऊपर है एक्स नॉट, तो फिर टू एक्स नॉट नीचे जाने वाला है, मतलब ये इस पे टू एक्स नॉट, इसमें एक्सटेंशन आने वाला है, या ओके। मतलब ऑफ कोर्स ये जितना नीचे आएगा उतना ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी ना, ऑब्वियस। सो दैट मीन्स टू एक्स नॉट नीचे जाएगा ये, राइट? सो इसका एक्सटेंशन भी टू एक्स नॉट हो जाएगा, विच मीन्स कि जो ये स्प्रिंग फोर्स आने वाला है दैट्स गोना बी इक्वल टू टू के एक्स नॉट, मतलब कि टू एम जी इस पे फोर्स लगने वाला है। सो टू एम जी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम जी, मतलब कि टू एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। सो द वेट ऑफ एम रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट एम इज कैपिटल एम अपॉन टू। इसमें जी क्यों डाल दिया? अच्छा, वेट ऑफ कोर्स। सो ए, okay, the tension in the rod when m is in what? When m has zero acceleration. Tension in the rod when m has zero acceleration. Wait, what? Ah, that's the equilibrium point, right? Of course, that's going to be equal to capital M upon G. Ah, of course. So B is correct as well. अपने को से करेक्ट चाहिए ना, या the normal force acting on m when m has zero acceleration. राइट, सो के एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन टू जी, तो ये ऊपर एम अपॉन टू जी फीचर है, मतलब कि या एम अपॉन टू जी, दैट्स राइट। सो सी का आंसर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम इज मैक्सिमम पॉसिबल इज कैपिटल एम जी, या राइट, वो तो दिख ही रहा है अपने को। सो डी इज राइट। नेक्स्ट 12th, a boy is pushing a box on horizontal floor from a position of rest to rest while moving on a straight line. Okay, consider three phases of the motion. Floor is rough with small friction. Question: initially, a constant hard push on the box to get it moving and attain a maximum velocity. Mild push to keep the box moving at constant velocity. And then third, to pull back the box. Q. Okay, to stop it with the same retardation. Fine. Right. So the following graphs are correct. Acceleration versus, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि क्या मतलब, हमने बताया है कि पहले सेम एक्सेलरेशन पे सेम रिटार्डेशन, सो या बी मस्ट बी करेक्ट ऑफ कोर्स। इज ए करेक्ट? दैट्स, ओह सॉरी, दैट्स एक्सेलरेशन, दैट्स नॉट द वेलोसिटी। क्या कर रहा हूं मैं? राइट, इसका या ओके, सो वेलोसिटी इज नॉट चेंज लाइक दिस एक्चुअली। वेलोसिटी ऐसे तो चेंज नहीं हो रही, दैट्स एक्सेलरेशन बेसिकली। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्कर, तो पहले क्या है? पहले तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, चल नहीं, हर जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही है ना, या सो m टाइम्स एक्सेलरेशन बट उससे थोड़ा सा बड़ा, राइट? फ्रिक्शन फोर्स, दैट्स कांस्टेंट, सो डी इज करेक्ट एट लीस्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्कर, दैट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होने वाला, राइट? सो a टाइम्स ऑफ m, मतलब कि इसका स्केल मल्टीपल, बट दैट प्लस द फ्रिक्शन फोर्स, सो एक्चुअल में ऐसा मेक सेंस। सो सी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट। 13, position of two vehicles A, B with reference to origin O and their velocities are as shown at time instant t equal to 0. Two vehicles A, B with reference origin and their velocities as shown. ठीक है, ये भी है, ये भी है. If they move with constant velocity as shown, okay, choose the correct. So false approach. That velocity is this thing. हाँ ठीक है ना, वही सब है इसमें, right? So ये point B है, and then what is this distance? ठीक है, -100 and what not. ओ यहाँ पे ये अपॉन स्क्वायर रूट 3 में डाल दिया, इसका टाइम स्क्वायर रूट होना चाहिए था, ये एक्चुअल में ओरिजिन में मीट करते थे, यू नो। वेल व्हाटएवर, लेट्स डू दिस थिंग। सो जो इनिशियल डिस्टेंस था वो कितना है? ओ पहले तो अपने को इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट? सो दिस थिंग इज 20 इन दिस डायरेक्शन, एंड सो ये ऊपर जा रहा है, इसका गो डाउन। सो 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, राइट? ऑफ कोर्स, या फिर इसको मैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, सो फिर अकॉर्डिंग टू बी ए कहाँ पर है? अभी वो है एट -100, 100 स्क्वायर रूट 3, राइट? और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है
20 comma negative 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3, राइट, ऑफ कोर्स. तो मुझे इसको रोटेट करने की इच्छा है, पहले तो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले तो इट्स लाइक 100 टाइम्स नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 1 कॉमा स्क्वायर रूट 3, एंड देन ये चीज़ हो जाएगी 20 टाइम्स 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3 टाइम्स square root 3 comma negative 1. Okay, interesting, right. अब मुझे इसको रोटेट करने की इच्छा है, so what I will do is I'll just divide this whole thing by, या फिर नहीं, एक काम थोड़ा सा मत करो, divide by this thing. So I'm gonna divide by square root 3 minus iota. Okay, yeah, that's gonna make sense. या फिर तुम कर सकते हो इसको इस टाइप से कि इसको 50 लिख दो, इसको, या राइट 50 नहीं, इसको 200 लिखो और इसको 40 लिखो और इसको 2 से डिवाइड करो, then now it's a unit vector, right? So we can just divide by this unit vector as a complex number, of course. तो वो करने से अपने को क्या मिल जाएगा, ये चला जाएगा, just 40 upon square root 3 in times 1 of 1, मतलब कि क्या 1,0, that's the velocity basically, right? और ये चीज़ क्या हो जाएगी, so मैंने डिवाइड किया इस चीज़ को, दिस इज लाइक, ओह इट्स शिफ्टेड, हाँ, उल्टा कर दिया, नेगेटिव कर, नहीं नेगेटिव नहीं किया, उसकी अलग ही कर दिया इसमें, राइट. Anyway, just have to divide by this thing. It's like negative 1 plus I square root 3 upon square root 3 minus iota, right? Gotta do this thing. So इससे multiply करो, नीचे क्या आ जाएगा, 3 plus 1 I guess, so 4, ऊपर है negative 1 plus I square root 3 times square root 3 minus, so plus iota of course, that should be the thing. शुरू करते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस एक बार नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, फिर आयोटा के लिए क्या आएगा, negative iota, and then plus 3, so yeah, plus 3 iota, that's the thing. मैंने करेक्ट तो किया ना, I guess so. yep, करेक्ट किया मैंने. So it's gonna be negative 2 square root 3, and then चीज़ क्या है, plus 2 iota, और ये upon 4 है. So basically like, you know, negative square root 3 plus iota upon 2, that's the thing. So वो अपने को यहाँ पे रखना पड़ेगा, right? Of course. So इसके जगह पे अपन ये रख सकते हैं, it is just negative square root 3 comma 1 and that thing upon 2, right? So अब अपने को मिल गई displacement in some other coordinate frame, and अपने को सिर्फ ऐसे भी मैग्नेट पूछने वाले, तो फर्क नहीं पड़ रहा कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या थे. अब इसको अपन प्लॉट करते हैं. तो इसकी जो वेलोसिटी है, इट्स completely along the x-axis, right? Yeah. So it's going like this basically. और ये इसका मिनिमम डिस्टेंस रहने वाला है, एंड इनिशियली इसकी पोजीशन कैसी है, ऐसी. तो ये जो चीज़ है, या ओके 200 in this direction. So negative square root 3 upon 2 and then plus 1 upon 2. मतलब कि क्या, ये जो एंगल रहेगा that's going to be equal to what? It's going to be 30 degree, right? So ये 30 degree है. Okay, nice. So we can of course figure out these things, like cosine of 60 degrees से multiply कर दो. So 100 is this distance, right? There we go. So minimum distance कितना हो गया? Distance of closest approach is 100. Yeah, so A is correct. What else? Magnitude of relative velocity is 40 upon square root 3 meter per second. Yes, that's also right. So B is also correct. और क्या है, the instant at which they are closest to each other is equal to 7.5. So initially यहाँ पे था, right? Of course. So इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? Of course, like 100 square root 3, और इसकी वेलोसिटी इतनी है, so just divide कर दो. Yeah, that's gonna do the thing. So 100 square root 3 upon 40 upon square root, मतलब ये टाइम square root 3 right? तो ये गया, और ये हो जाएगा 5 upon 2, और ये हो जाएगा 3, like 15 upon 2, right? Which is 7.5 of course. So C is also correct. Okay, all about, नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ये तो ऑफ कोर्स इनकरेक्ट है, राइट? ओके, नेक्स्ट. ओके, 14th इज क्या हो गया इसको. ओके, अ पार्टिकल मूव्स इन xy plane with constant acceleration of 1.5 meter per second square. Okay, in a direction making an angle of 37 degree with the x-axis. So ये x-axis है और ये acceleration ऐसा है, whatever. Oh, it's a constant acceleration, huh? Okay. At equal to the particle is at the origin and velocity is 8 meter. Okay, fine. Choose the correct statements.
At t equal to 4 seconds, the coordinates of the particle. Oh god, I don't like this. No, अपने को उसको दो इससे ब्रेक करना पड़ेगा. It's just so painful. That's 37 degree, huh? Okay. ये क्या होगा 0.9, ये हो जाएगा 1.2. ओके, सो y में कितना है 0.9 एंड x में कितना है 1.2. ओके, एट t इक्वल टू 4 कोऑर्डिनेट्स पूछे, सो इसका पोजीशन लिख दो ना. इसका भी 80 माइनस हाफ, so plus half 80 square, right, which is like plus 0.6 times t square, comma, half 80 square, whether this is 0.45 times t square. This thing. So at t equal to 4 क्या हो जाएगा, it's going to be 8 times 4 यानी कि 32 plus, so ये आ जाएगा 16 times 6 is like 96, so it's going to be just 9.6. और ये चीज़ क्या है, so times 4 क्या हो जाएगा 0.9, oh 4 का square by the way, so 16 यानी कि क्या 8 times of 0.9 which is 11.2. These are the coordinates, which is 4, 1.6, 7.2. Is that a thing? Yeah, so A is correct. At t equal to 4 seconds, velocity makes an angle of this much with the x-axis. Velocity निकालो. Seriously यार क्या घटिया ये. T equal to 4, right? Of course. So this plus 4 is gonna be like 4.8 plus 8, which is 12.8, comma. So you got 0.9 times 4, right? Which is just 3.6, right? क्या 4 के मल्टीपल्स है ना ये सारे सारे, मैंने डायरेक्टली रिड्यूस क्यों नहीं किया, easy as that, right? So it's 2 plus 1.2 which is actually just 3.2, comma 0.9. ये बेटर है ना, या ऑफ कोर्स. और इसको रिड्यूस कर सकते हैं शायद से, सो मैं इसको 32,9 लिख सकते हैं. एंड ओके नहीं, इससे रिड्यूस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, राइट? सो दैट्स द वेलोसिटी. इट मेक्स 9/32 का tan inverse with the x-axis. So C is answer. Yeah, okay. Next question, 15th. A block of mass 1 kg is at rest with respect to a wedge moving towards left with constant acceleration of 5 meter per second square. तो ये लेफ्ट में जा रहा है, acceleration दिया. Let R be a normal reaction between the block and the wedge. अच्छा, all surfaces are smooth. So between block and wedge, right? Okay. And what is it? Rest with respect to the wedge. Oh, that's awesome. Okay, cool. Then, so of course normal gravity को हटा दे रहा है, and then just, yeah, of course. That's the thing. It's like acceleration A. अच्छा, इस पे जो फोर्स है अपने को पता नहीं वेज पे क्या हो रहा है, राइट? ओके, ये तो इजी है, इतना बुरा भी नहीं है. सो या राइट. अच्छा, तुमको सिर्फ रिएक्शन फोर्स चाहिए, राइट? सो जी को ब्रेक करो ना, जी को दो कंपाउंड में ब्रेक करो, लाइक दिस एंड लाइक दैट. हाँ, वेट अ सेकेंड, तुमने जी को तो ब्रेक कर दिया, और okay, something's not right about this. Of course, pseudo force भी है ना इसमें, उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा. That is too much. Okay, n को ही ब्रेक करते हैं. So n times cosine of ये वाला जो एंगल रहने वाला है, तो ये एंगल जो है तो ये ढूंढना है. We know that this angle is theta, 90 minus theta. This is going to be theta as well. So n cosine theta is equal to mg. I guess that makes sense, right? Shit. Ouch. Okay. हाँ, मैं क्या कर रहा था? Yeah, that should be correct. So, थीटा है क्या? कितना थीटा है? तो थीटा दिया ही नहीं है. अपने को एक्सेलरेशन दिया है बाय द वे. ओह, राइट. सो ये तो हो गया, एंड देन n sin थीटा जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा उसका, दैट्स इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a. स्टिल अपने को थीटा तो दिया है नहीं, सो हाँ, ओके, जस्ट हैव टू ऐड दिस. ओके, स्क्वायर करके ऐड करो, लाइक n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स, हाँ बेसिकली n इज इक्वल टू m टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. ठीक है, मास कितना दिया है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 एंड g is 10, so 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, 5 स्क्वायर 5, सो 15th का आंसर A. और फिर अपने को थीटा ढूंढना है, ऑफ कोर्स का तुम
Yeah, like tan theta is equal to a upon c, which is 1 upon 2. So tan inverse of 1 upon 2. Right. Okay, so C is right. Next. So let's go to physics 16 now. Okay, a particle moving with speed v changes its direction of motion by angle theta without changing its speed. Changing speed, okay. Uh, moving with speed v changes its direction of motion by angle theta. Right. Okay, magnitude of change of velocity is 2v sine of theta. Of course, I mean, right. Yeah, that's for sure. It's correct. So A तो correct है. Magnitude of change of velocity is zero. No. Change in magnitude of velocity is zero. Yeah, that's right. So C is right. C is right and A is right. Okay. Next, the following statements either are true. The magnitude of sum of two vectors must be greater than the magnitude of their vector. You mean the sum of the magnitude? पता नहीं क्या बोल रही है. हाँ, of their vector. उनका कौन सा कॉमन वेक्टर? क्या बोल रहा है ये? कुछ आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है. Most likely बोल रहा है कि magnitude of the sum of the two vectors is bigger than sum of their magnitude, which is of course false. But ये मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं इसको just leave कर रहा हूँ. If the speed of moving particle is constant, the acceleration must be zero. That's wrong. Distance be traveled by an object must be greater than or equal to the magnitude of displacement vector. That's right. So C is right. Okay, if a particle is moving along a circle, it must be accelerating. Yes. So C is right, D is right. I mean, of course, my velocity change होगी ना, so it must be accelerating. Okay, if t is the total time of flight, h is the maximum height, and r is the range of for horizontal motion. Okay, the x and y coordinates of projectile motion and time t are related as. So what are those? क्या है यार? Okay, t is the total time of flight and whatnot. Fine. So x तो अपन आराम से निकाल सकते हैं. Y थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, right? Yeah, of course. So क्या कर सकता हूँ मैं इसको इजीली निकालने के लिए? 4h. Why is that the case? 4h t upon t. That's weird. And then how is y related? And what is h, by the way? H is the maximum height, huh? Okay. So for example, t upon 2 पे क्या हो जाएगा? Yeah, it's gonna be just h. So that looks good. T equal to 0 पे y 0 हो रहा है and t equal to capital T पे y 0 हो रहा है. That's all we need really. मतलब हाँ, this is actually correct. And dimensional analysis से अपन बोल सकते हैं कि it is correct. We know it's supposed to be parabola, downward parabola, and it makes perfect sense to do this thing. So A is correct. ये क्या चीज़ है? And by the way, x is just proportional to x. Sorry, proportional to t, of course. So t upon capital T is x upon r makes perfect sense. So ये भी काम कर देगा. So B is also correct. ये सही नहीं है, कुछ है. Okay, ये भी गलत है. Next. An observer moves with constant speed along the line joining the two stationary objects. He will observe that the two objects. Wait, what? Observer moves with a constant speed along the line joining two stationary objects. He will observe the two objects have the same speed. Of course, yaar. Move in the same direction. Yes. Have the same velocity. Right. Stationary objects. Of course. Yeah, so B is correct. A is correct. In the same direction. Unless we rotate our observer, then this is weird. But other than that, I think B is correct. A is correct. Move in the same direction. Ha. Move in the opposite. No. Okay, so A, B, C. 20 करते हैं. A man on rectilinearly moving cart facing the direction of motion throws a ball straight up with respect to himself. Sure. Rectilinear moving cart facing the direction of motion throws up a ball. Okay. The ball will always return to him.
Yeah, because okay नहीं अगर एक्सीलरेट हुआ तो फिर नहीं, but it's a rectilinearly moving car. Okay, acceleration zero ऐसा बोला कोई ने. The ball, right? Okay, ball will return to him if the cart moves with constant velocity. Yeah, and assuming drag force zero. The ball will fall behind if the cart moves with some acceleration. Depends. Okay, acceleration I think तुम बोल रहे हो कि उसकी velocity increase हो रही है. फिर ठीक है. अगर deceleration रहेगा तो उल्टा रहेगा, right? So C and D I think. 21. Okay, a block is pushed with velocity 2 meter per second to the ground on a belt which is moving with constant with a velocity, okay, 4 meter per second in the direction opposite to the initial velocity of the block. The block stops slipping on the belt after 4 seconds of, okay, slipping on the belt, हाँ. हम्म. अच्छा ठीक है, तो इनिशियल उसकी 2 इस डायरेक्शन में थी, अब 4 उस डायरेक्शन में, सो कितना चेंज हुआ 6 का, राइट. ओके, so after 4 seconds, then displacement with respect to ground, ये तो easy है, v plus ut upon 2, right? So v कितना था इसमें, -4 I guess. Oh wait, we just want displacement, of course, that's what you want. So -4 and then initially 2 था, so -4 plus u upon 2 times the time required, which is क्या, कितना टाइम है, 4 second, right? So it's going to be -2 upon 2 is like -1 times 4, so 4 is definitely the displacement. Magnetic displacement with respect to ground is 4 seconds. Yeah, that's right. So C is correct. Oh wait, you can displacement with respect to ground is 0 after 2.66 second, and magnetic of displacement with respect to ground is 12 meter after 4 seconds. Okay, तो फिर ये जो लास्ट पार्ट है ये तो अपने आप गलत हो गया, राइट? Of course. Okay. Magnetic of displacement with respect to ground is in 4 seconds is 4 meters. Of course. Magnetic of displacement, sorry. Magnetic of displacement with respect to belt in 4 seconds. With respect to belt क्या हो रहा है? Finally इसका 0 है. Initially कितना था? Initially it was moving with 6, I guess, right? Relative to ground था नहीं, तो yeah, right. I guess that makes sense. And then T upon 2 and everything. So 12, of course. So C is correct. अपने को क्या चाहिए? Correct statements. So B and C are correct. Displacement of the ground is 0 in 8 upon 3 second. Right. Okay. So acceleration इसमें कितनी थी? Finally इसका velocity कितनी हो गई? -4. So -4 upon, yeah, like -6 upon 4. That's the acceleration, right? I guess so. 8 upon 3, huh? Right. So it's got 2. And then कितना था, -6 upon 4, and that is of 8 upon 3. Is that going to be 0? It's going to be, yes, it's going to be 0. So D is correct. So B, C, D. Right. Next, 22. A block rests over another block placed over a smooth horizontal surface. There is a friction between A and P. Sure. Okay, horizontal force F1 gradually increasing from 0 to maximum is applied to A so that the block move together without relative motion. A और A के, अच्छा A B के ऊपर बैठा हुआ है, तुमने फोर्स लगाया है, gradually increase from 0. Instead of this, another horizontal force F2 gradually increasing from 0 to maximum is applied on B so that the blocks move together without relative motion. अच्छा, right. राइट, दोनों केसेस में विदाउट रिलेटिव मोशन हो रहा है, राइट? हाँ, फिर अपने को सिर्फ मैक्सिमम फोर्स कितना है वो देखना है, राइट? ओके, कूल. और ये स्मूथ है, आई गेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इनके बीच में फ्रिक्शन है, राइट? सो एफ मैक्स कितना है, और हाँ 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 समझा, राइट? लाइक ये वेट, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ओ गॉड, ये तो सेम हो जाएगा, राइट? For that happen like f upon a plus b, so f upon 8, और अच्छा इसका रेशियो जो भी देखना है, देखते हैं ना. So like f upon 8, that's the acceleration in both the cases, of course. So
right, in this particular case जो b है that's moving with its acceleration, so the friction force is just 3 times of f upon 8, right? And that friction must be at the maximum, so this is equal to our f max, right? So f1 max times 3 upon 8 is equal to f max, and f2 upon 8 times, so इस केस में a move कर रहा है, right? That's equal to f max. So of course ratio ले लोगे, what do you get? You just get like 3f1 is equal to 5f2, so f1 upon f2 is just equal to 5 upon 3. That should do it. So it's 5:3, right? So of course f1 is bigger than f2, right? So 22 का answer B. Right, and f1 is to f2, that is equal to 5 upon 3. That's also correct. So D is also right. Next. Yeah, this makes sense, I guess. थोड़ा सा ये अजीब है ना. Well, whatever. Next question. 23. Two identical bodies are interconnected with a massless and inaccessible thread. System is in gravity-free space with the thread just taut. दो आइडेंटिकल बॉडीज है, उनको कनेक्ट किया है थ्रेड से, gravity free space in the threads. Okay, each ball is imparted velocity v, one towards the other ball and the other perpendicular to the first. इसको तुमने v ऐसा दे दिया and the other is perpendicular. और अच्छा एक को तुमने velocity right okay at t equal to 0, then the thread will become taut at and gravity free space. But hey, इनके बीच में gravity है कि नहीं है? I guess it's not there. Well, whatever. ठीक है ना, assume कर दो इसमें gravity नहीं है. Yeah, that's whatever. Okay, अब तुम करना क्या है? The thread will become and initially thread is just taut, हाँ, right? With respect to ये क्या हो रहा है? It's actually moving like this, right? So इसका dr upon dt उल्टा, okay, right, and this is just a tangential velocity and everything. With respect to this guy, it's moving like ऐसा, okay. So v in this direction and then v in that direction, right? इसका खुद का भी acceleration है, right? That's the problematic thing. Right. अच्छा, initially जो है ये दोनों पे कोई force लग नहीं रहा है, right? Of course. So it's just gonna go like this. तो जब यहाँ पे आएगा at that point it will become taut. तो अपने को ये distance, right, basically makes sense. So ये तो 45 degree होने वाला है. We just know it's gonna be right about that. Of course, yeah, because this distance is gonna be the same thing as that. So वो हो जाएगा अपने आप, right? So ये कितना रहने वाला है? ये लेंथ कितनी है? L अगर लेंथ है, fine. So L upon V is the time required. Yeah, that's the thing. Thread will become taut after L equal to V. Thread will become taut after some time less than L upon V. Thread will always remain taut for T bigger than L upon V. I guess this is correct. क्योंकि once it's taut, right? Okay, फिर इसको impulse मिल जाएगा and everything. It's kind of weird actually. Yeah, I mean, I guess C correct है, but मैं उसका exactly मतलब उसका रीजन मैं दे नहीं पा रहा हूँ. I know, मान चाहिए. और क्या हो सकता है अगर वो टॉट नहीं है, then कैसे हो सकता है कि look ये ऊपर गया ना? Okay, somehow wait, identical balls, right? Of course. Okay, then I guess it's correct to say these should be taut. Right. So this is okay. At this point, ये ऐसे move कर रहा है. This is actually moving like this. Whatever. We know कि thread ऐसे दो momentums पे apply करेंगे such that, right, ये थोड़ा सा change हो जाएगा और इस तरह से change हो जाएगा, right? It makes sense. तो दोनों की velocity इस direction में same हो जाएगी, right? और ये जो velocities रहने वाली है वो still वैसी की वैसी रहेगी, right? Yeah. Interesting. सेंटर ऑफ मास तो ऐसा है यहाँ पे. मैंने आपको डी आर अपॉन डी टी 0 चाहिए ना, वो हो जाएगा यार, अपने आप हो जाएगा. थ्रेड विल बिकम टॉट बाय इटसेल्फ.
आई गेस सी इतना बुरा नहीं है, पर बोल सकते हैं ऐसा होने वाला है. सो सी माइट बी करेक्ट. आई थिंक ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट. और क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन mv स्क्वायर्ड. um wait, mv स्क्वायर्ड व्हाट? बट नहीं, ये तो uh, और m क्या है इसमें? ये दोनों का मास m रहेगा रहेगा ना कि नहीं? पर दोनों वेलोसिटी, दोनों स्पीड v से जा रहे हैं, तो फिर mv 2mv स्क्वायर वाज इनिशियल वेलोसिटी. तो व्हाट यू मीन बाय इट विल ऑलवेज रिमेन mv स्क्वायर्ड? यू मीन आफ्टरवर्ड्स और समथिंग? ऑफ कोर्स जब मोमेंटम ने अप्लाई किया तब ये चेंज हुआ, राइट, थोड़ा बहुत. So that impulsive momentum did create, energy. So that's important. Wait, but the points of application साथ में मूव कर नहीं. स्प्रिंग को थोड़ा बहुत तुम इनएक्सटेंसिबल सोच सकते हो. तो वो थोड़े से टाइम के लिए स्प्रिंग जैसे काम किया उसने. एंड देन यस, राइट, the energy will actually be less than the usual. Oh, this is very weird. Okay, interesting. क्या होने क्या वाला है जब ये एक्चुअल में टॉप हो जाएगा? So think about it. It's going like this with velocity v at 45 degree. तो यहाँ पे क्या हो रहा है basically? देख, like this is a v upon square root two. This thing is v upon square root 2, whatever. Oh, sorry, no. Okay, this is actually going with. Yeah, right. It is correct. No, 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 no. Something's wrong. ये ऐसे मूव करा था, right? Okay, ये सही नहीं है. It's going like this. इसकी velocity v ऐसी है, and this is actually going like that. So velocity v like this. तुमने इस पे फोर्स अप्लाई किया कुछ भी, तुमने इस पे मतलब जो वेलोसिटी है ये दोनों का सेम होने वाला, राइट? या तुमने इसकी वेलोसिटी कम की, इसकी तुमने बढ़ा दी. ऑफ कोर्स इट्स गोना बी v अपॉन 2 v अपॉन 2. तो ये होने के बाद में इट्स गोना गेन दिस वेलोसिटी. ये v अपॉन 2 ये हो चुका बिकॉज वी वांट dr अपॉन dt टू बी 0. सो दैट्स व्हाई, राइट. वंस दैट हैपेंस, तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है दैट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अपॉन 2 नाउ एंड जस्ट रोटेटिंग लाइक दिस. सो इट्स ऑलवेज गोना रिमेन लाइक दैट. तो अब बेसिकली अब एनर्जी कितनी हो गई है? सो ये v अपॉन 2 है, ये v अपॉन, राइट, इट्स गोना बी m टाइम्स, so v square upon 4 plus v square upon 4 plus v square, right? Exactly. And half of that actually. So ये कितना हो जाएगा? v square upon 2 plus, okay, it's going to be 3 upon 2 v square. So उसका आता है like 3 upon 4 v square times m. तो ये तो of course नहीं है, right? Yeah. So ये 3/4 mv square और initially 2 mv square था, right? So change हुआ ना ये? Right, it did change. पर ये वर्क को स्ट्रिंग ने किया है. ओके, दैट्स व्हाट हैपेंड. 23 हो गया. आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ. चल सी नेक्स्ट वीडियो. पहले अपन इसको चेक कर लेते ना. या ये हैंग क्यों जाता है हर बार? पहला है ABCD, सेकंड है ACD, देन AD, देन just CD. Okay, so CD, this is incorrect. Then ABD, then C, then surf D, huh? C. Okay, then AB, then ABC, then 10th का ABD. What? मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट कर दिया. Oh God. Then 11th का ACD है. So this is not right. Then ACD. Then 12th का CD. Okay, that's right. Then 13th का ABC. 14th का AC. This is also AC. 16th की AC. No, or okay, this is not right. 17th का AC है ना. Okay. 18th का AB. And then this is like ABC. फिर CD and then BCD. Then PD and AC. देखते क्या गलत हुआ इसमें. So 4th का BCD नहीं है and CD only. ऊपर जाना यार, क्या हो रहा है इसमें? So from beginning till the collision of the wall, the center of mass of E plus W is stationary. Well, it is. Oh, अच्छा, vertically move हो रहा है. Okay. Come on यार. Okay, ये गलती हुई मुझसे. It's not
ओके इट्स स्टेशनरी ओनली द एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल तो मूव हो रहा है ना। या राइट, हाँ मुझे देखना चाहिए था उसमें, ये बुरा हो गया। ठीक है, सो फोर्थ रीजन मुझे मेरा इनकरेक्ट है। ओके, और क्या है सेवंथ का बी डी, सो बी इनकरेक्ट है। हम्म, और सिर्फ डी करेक्ट है। सो लाइक ए सी 7 बी मूव नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाट वी गॉट राइट। एंड या ओके, सो ये 2t एंड दिस इज लाइक, एक और वापस करते हैं। सो टी डॉट एक्स ए के लिए क्या हो रहा है, जस्ट 2t टाइम्स 2t upon ma, which is just 1, and that minus of g effective, which is just mu g. So mu कितना 0.5 times g is just 10. So 5 बोलो, फिर एक काम करना 1/2 g बोलो, minus 1/2 g, right? And then what for c? So for c is के ऊपर टेंशन t है, so plus t, and then you got t upon m3. Okay, so we just t upon 2, and then minus g, right? And this must be equal to 0. So ये दोनों एक्सप्रेशन निकाल अपने, of course. What does this mean? It means 4t minus g plus t upon 2 minus t is equal to 0. So 9 upon 2g, sorry, 9 upon 2t is equal to 2g. So t should just be 4g upon 9. So what is the acceleration of c in this case? It's gonna be this thing, right? So 2 upon 9g minus g, which is of course 7 upon 9g. So what's the big deal? Why is this not correct? It must be correct, right? Yeah, the negative में है, I get it, but it is really just 7 upon 9. It should have worked. I don't know यार, ये उनका incorrect है most likely. उन्होंने incorrect किया खुद का। ठीक है, so seventh, yeah, नहीं इनका incorrect है। इनका ये वाला correct है कि हाँ मेरा B गलत हुआ। Okay, then 10th उन्होंने C नहीं करके ABD बोला है। Okay, the following is incorrect. Oh god, wait, what? Wait, the following is incorrect, but ये तो incorrect नहीं है, and ये भी, सारे जो करेक्ट है उन लोगों ने वो इनकरेक्ट बोल दिए। इनका गलत हो गया, इनका गलत हुआ है। ऑफ कोर्स सी सिर्फ है जो कि इनकरेक्ट है, राइट? या राइट, राइट, ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग, व्हाट एल्स, इट मस्ट बी लाइक दिस, इट शुड, या लाइक सी इज द इनकरेक्ट थिंग, सो दैट्स द आंसर। इन लोगों ने हाँ ठीक है। 11th, so according to them B is not right. टेंशन इन रॉड, कौन सा रॉड? वेट, इसमें रॉड कहीं है क्या? वेट, टेंशन इन द रॉड, कौन सा रॉड? अच्छा ये, ओ ये रॉड, मुझे अभी तक स्ट्रिंग लग रहा था। ओ इट्स गोना बी एम जी नॉट एम जी। ओके, ये मैंने सही से पढ़ा नहीं इसलिए गलत हुआ। ठीक है, 11th उनका सही है, राइट। एंड देन 17, 17 मैंने सी डी दिया, उन लोगों ने ए सी दिया है। ओके, so magnitude of sum of the two vectors must be greater than the magnitude of their vector. So इनमें से कौन सी true है? Is this true? It should be less than the sum of the magnitudes. Okay. कुछ भी अजीब है ये तो मुझे पता नहीं क्या केस। और लोगों ने कहा कि D incorrect है। Particle is moving in a circle along a circle. It must be accelerating. Yes, it must be. What's the deal, हाँ? इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी खुद भी चेंज हो ही रही होगी। डजंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग, सो इट मस्ट बी एक्सेलरेटिंग। ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, है ऐसा कोई पॉइंट? आई डोंट थिंक सो, अनलेस ऑफ कोर्स हमारा सर्कल एक स्ट्रेट लाइन है। इन दैट केस क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग है इसे वो। नहीं यार, डी इज ट्रू। हाउ कैन यू से कि जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसमें एक्सेलरेशन जीरो? That's just not correct, right?
ऑफ कोर्स c वेलोसिटी और वेलोसिटी अलग अलग है, सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? वेट, क्या ऐसा, क्या इनका मतलब है कि व्हेन इट्स एक्सेलरेटिंग इट्स लाइक, ओ इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहे हो? हाँ, आई डोंट नो, पर इसका वेक्टर एक्सेलरेशन तो है, राइट? ओके वॉट एवर, सो इनका गलत हुआ इसमें और मेरा सही है। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।